अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले एक सीरीज़ में हमने देखा था कि किस तरह से मॉडलिंग वगैरह होगी, एनिमेशन होगी एंड देन लेटर ऑन किस तरह से उसको प्री विजुअल के साथ मैच करके वी कैन क्रिएट अ गुड एनिमेशन विद ऑल द ट्रांजिशंस रिक्वायर्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट इसको मैं देख लेते हैं। सो राइट नाउ वी हैव दिस। Before jumping into the lighting and shading part, let's just do one thing. Uh, uh, let me just open this up. Shot. ठीक है, तो ये पहला शॉट है पूरी फिल्म का, right? And let's start shading and texturing it and lighting it. So before we jump into this, इस पर काम करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट सीन बना देते हैं और इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से सारे फंक्शंस काम करते हैं सो दैट ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ठीक है, एक सैम्पल सेट बना लेते हैं। सो ये आपका एक क्यूब आ गया, इसको मैं वॉक्सल कर देता हूँ, वॉक्सल मैं इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं वॉक्सल बंद कर रहा हूँ। वॉक्सल आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस व्हाट इट इज। ठीक है, स्फीयर वॉक्सल बेसिकली आपकी रिप्रेजेंटेशन है वॉल्यूम की इन फॉर्म्स ऑफ वॉक्सल्स। वॉक्सल्स मीन्स ये जो पिक्सल्स आ रहे हैं। सो बेसिकली इफ यू सी दम क्लोजली यू विल सी कि ये बॉक्सेस नहीं, ये फ्लैट रेक्टेंगल्स स्क्वायर्स हैं जो कि कैमरे को फेस कर रहे हैं। Well, at least that's what it looks like. Okay, so it's just a representation of volume. So it's not that heavy. ये बहुत लाइट वेट है। ओके, सो वॉल्यूम के अंदर में क्यूब रख लिया, स्फीयर रखते हैं तो वो भी मर्ज हो गया। ठीक है, नाउ वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ हॉलो इफेक्ट। द रीज़न वाई एम डूइंग दिस इज़ टू क्रिएट अ लॉट ऑफ सरफेस चेंजेस कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कल भी आ जाए, कुछ हार्ड एजेस भी आ जाए, कुछ इनर आपके पास वो भी स्पेसेस भी आ जाएं जो कि एम्बोज्ड हैं या अंदर की तरफ हैं, तो हर तरह की सरफेस आ जाएगी, तो एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस एज वेल। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। सो लेट जस्ट डू वन मोर थिंग। अभी पिक्सल का साइज़, वॉक्सल का साइज़ बहुत ज़्यादा है, लेट जस्ट डू दैट कि ये 1 हो जाए। अब स्फीयर और रेक्टेंगल एज यू कैन सी, अच्छा यहाँ पे अभी नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि व्यू पोर्ट अभी स्मूथ शेडिंग पर ऑन है। ओके, सो इफ़ यू वांट टू चेंज, यहाँ से भी चेंज हो सकता है, बट आई प्रेफर कि आप शॉर्ट की यूज़ करें। एन प्रेस करने से ये सारे शॉर्ट कीज़ आ जाती। ग्राउंड शेडिंग ऑन करना है तो अब आप बी प्रेस कर दें इसके बाद, एन के बाद। ठीक है, सो इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी हैं। सो आई प्रेफर दिस वन, इसमें शेयरिंग भी आ रही होती है और आपको टोपोलॉजी का भी पता चल रहा होता है। सो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन दिस और हाइट सेगमेंट्स बढ़ा लेते हैं, हाइट के सेगमेंट्स यहाँ से भी बढ़ा लेते हैं, स्फीयर के भी सेगमेंट्स बढ़ा लेते हैं तो ये स्मूथ हो जाए। लेट्स जस्ट ओपन दिस अप एज वेल। ठीक है, अभी मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा और स्मूथ हो सकता है, तो लेट्स डू दैट। इसी के ऊपर एक स्मूथ का एक फ़िल्टर यहाँ से रख सकते हैं, SDF स्मूथ। सो दिस कैन स्मूथ थिंग्स आउट। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं चाहिए थी, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा और स्ट्रेंथ में कर दूँगा मे बी 20। लेट्स ट्राई 20। ठीक है, अगेन दिस इज़ फाइन, बट यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट रिमूव इट और इसके सरफेस के जो सेगमेंट्स हैं वो और बढ़ा देते हैं, सिलेंडर के भी और बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो नाउ दे लुक जस्ट फाइन। नाउ बिकॉज दिस इज़ अ वॉक्सल, ये रेंडर में नज़र नहीं आएगा। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ मैश आउट ऑफ इट। वो किस तरह होगा, आप इसी वॉक्सल सेटिंग में जाएं, इसको आप यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं और इसके ऊपर इसको मैशर के अंदर रखते हैं, तो ये जो भी वॉल्यूम होगा उसका मैश बन जाएगा। एज यू कैन सी दीज आर ऑल दिस पॉलीगॉन्स। सो वंस दिस पॉलीगॉन्स आर रेडी, बट ये देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन काउंट है, ये फाइल को हैवी कर सकता है। राइट नाउ इट लुक्स फाइन बिकॉज एक ही ऑब्जेक्ट है, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इट गेट्स हैवियर। So we try to minimize these polygon counts as much as we can without losing the quality.
ठीक है. सो वॉल्यूम मैशर अडेप्टिव को अगर मैं 0.1 करूँगा तो इट विल गिव द मैक्सिमम अमाउंट जो कि शेप को मैनेज करते हुए ये रिड्यूस कर सकता है पॉलीगॉन्स को. ठीक है. सो आई थिंक वी आर गुड टू गो राइट नाउ. बट ये कि मैं इसको एक काम और कर लेता हूँ कि इसके पॉलीगॉन्स आप देख रहे हैं यहाँ से, ये कोई ट्रायंगल है, कोई क्वाड है. ठीक है. ट्रायंगल मतलब 3 एजिस पे बना हुआ सरफेस, और क्वाड का मतलब 4 एजिस पे बना हुआ सरफेस पॉलीगॉन. ठीक है. सो 1 2 3, दिस इज अ क्वाड polygon and this is a triangle polygon. ठीक है. ओके. सो नाउ वी हैव दिस. एक काम और कर लेते हैं कि मैं यहाँ से भी एक पार्ट बाहर निकाल लेता हूँ. तो क्योंकि ये सब कुछ प्रोसीजरल है, मैं ये दोनों को बंद करूँगा एंड आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट. ठीक है. आई कैन जस्ट रोटेट इट 90 डिग्री. इसको इधर ले आते हैं, अंदर करते हैं एंड आई कैन जस्ट डू दिस. ठीक है. और इसको मैं अंदर रखता हूँ और once I open this up, let's see. ठीक है. So we have different kind of geometries right now. So let's just create a mesh out of them. Or maybe if we don't want to create a mesh, we can just use adapter. Let's just say 1. नहीं 1 नहीं था, ये 0 था. और इसके अलावा we can use Z remesher जो कि recently launch हुआ है. So let me just give you guys a quick tip here. Okay, mesh. ठीक है. I'm not going to give a little to go into the details of it, but make it like a surface knowledge दे देता हूँ जिससे आप explore करना शुरू हो जाए at least. So let me just zoom in. So आपके देख सकते हैं अब ये इसने काफ़ी सारे polygons square कर दिए. ठीक है. You see, even if you zoom in, they are chords, they are not triangles, but they are a bit too much. और इसने screen को भी heavy कर दिया. So we need to reduce the density of this whole thing. ठीक है. ठीक है. अब ये देखें खुद ही सही हो गया because वो यहाँ पर calculate कर रहा था amount. But still we need polygon count. ठीक है. और we need instant mesh. जैसे instant mesh पर आएंगे आपके पास quad का ऑप्शन आ जाएगा. Now you can see it's super low poly. ओके. अब ये यहाँ पे मैंने, मुझे लगता है रोटेशन गलत रखी हुई थी. तो अब क्योंकि ये सब कुछ प्रोसीजरल है, मैं इन सबको बंद करके आई कैन जस्ट सिंपली से दिस. So you can see a lot of things like that. You can do a lot of things like this, make many complex shapes out of it. ठीक है. intersection है, addition है, union है, वगैरह वगैरह. So let me just, अब यहाँ पर फिर से वो एक शुरू होगी and then we are fine. ठीक है. एक काम अब ये कर सकते हैं अब, क्योंकि पॉलीगॉन काउंट जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँ, यू कैन सी 2000 पॉलीगॉन. कीप आउटलाइन, कीप ट्रेसेस, चेक कर लेते हैं क्या 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 पॉसिबिलिटी है इसमें. ठीक है. इट हैज़ ट्राइड टू क्रिएट दीज क्रीसेस. ठीक है. बट ये कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ. सो द मोर polygon count we will increase, the more better results we will get. So let's just try 10,000. So again, this is just for the अब surface बहुत बेहतर हो गई है पहले से. ठीक है. So this is the kind of thing you can get after after doing a lot of iterations. So let's try quad. So जैसे quad पे क्लिक किया, you can see यहाँ पे काफ़ी improvement आई है. Let's try one more thing कि अगर यहाँ पे edge angle 40 है, इसको अगर मैं 90 करूँ तो क्या difference आएगा. So these are the things which you can experiment on, but right now the purpose of this tutorial is not to do that. But yeah है कि you can play around with these things. Okay. So if I just say कि mesh density की बात की जाए और polygon count की बात नहीं की जाए, तो you can see different results, maybe better because it is based on density. सही. So जैसे ये हो जाता है, meanwhile ये हो रहा है, तो let me just give you guys a quick preview of Octane. ठीक है. तो Octane आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. just search Octane trial और Octane render trial. यहाँ पर आ जाएगा. डेमो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं for a month. It's not that expensive as well. It's like 5 to 4,000 rupees per month. Okay. I know it can be a bit difficult, but ये है कि it is better than
better than paying for an online course or things like that. I mean, you have to invest a few amount of money to get things sorted. However, you can try this trial, or once you are in it, you can, if you want to buy, यहाँ पे trial का option है, but if you want to rent, ये आपको rent का option भी मिल जाएगा. जो rent का option है वो कहाँ से आएगा? Studio use कर रहे हैं आप, monthly subscription ये वाला pick करें, ठीक है, unless you want to buy the yearly package. Okay, I do suggest this one as well, but however, I have the monthly package because it depends on the project. It depends on project to project, because sometimes I'm working on 2D or sometimes 3D. Say, so however, you can try the free version here. Okay, so let's see, ये हो गया. Okay, as you can see कि ये mesh density पे काम करता है, and you can see this thing. Okay, इसको. So right now I'm not really interested in remesher. ठीक है, remesher को मैंने सिर्फ इसलिए explain कर दिया था because I wanted to let you guys know about the power of this. But because ये सिर्फ एक example है, तो I'm okay with this amount of polygon. Okay. So let's just start the rendering thing. पहले मैं इसकी composition थोड़ी बेहतर कर लेता हूँ. Let's just say कि पहले मैं gray हटा दूँगा. I don't really like this transparency. Shift V, and once you are here, you can just click on the save frames and turn the opacity to 100. ठीक है, और because there are a lot of negative area around it, तो let's just say कि इसकी composition थोड़ी सी बेहतर कर लेता है. So the purpose of creating this whole file is to give you guys an idea how to render and texture from scratch. Okay, so let me just save it. Lighting. Okay, so क्योंकि बस मुझे लगता है मैं इनको फाइल्स को मैनेज सही नहीं कर सका, so यहाँ पर सारे versions आ रहे हैं. However, I usually try to create a separate folder of them. So do try that as well. I highly recommend it. Let me just create a new folder for LD. LD means look development. And let's just say test. Okay, so इस कैमरा सेलेक्ट करते हैं, कैमरा क्रिएट कर लेते हैं. इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो यही ऑब्जेक्ट को दिखाएगा. इसी कैमरा के थ्रू हम देख रहे हैं. अब इसको मैं इसका लेंस चेंज करके पोर्ट्रेट कर देता हूँ, जस्ट सो आई कैन get rid of some of the diagonal lines. Okay, this looks much better here. Okay, so let's try some of the stuff in Octane now. So Octane जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एक फोल्डर आएगा. फोल्डर जो डाउनलोड होगा उसको आपने यहाँ रख देना है. मैं आपको बता देता हूँ, एडिट, प्रेफरेंसेस और प्रेफरेंसेस फोल्डर. ठीक है, इसमें अंदर आकर यू शुड गो टू प्लगइन्स फोल्डर और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दें. ठीक है, अंदर प्लगइन्स की काफ़ी ये वाली फाइल्स आपके पास काफ़ी सारी आएंगी. आपने सिर्फ वो वाली छोड़ देनी है जो कि आपके सिनेमा से मैच करती है, बाकी सारी डिलीट कर दें. ठीक है, यहाँ पर 2023 और इसके पहले वाले भी आपको एक लिस्ट में मिल जाएंगे once you download them. Okay, so let me give you guys one more thing. Okay, for example, let me just sign in. So जब तक ये sign in हो रहा है, let's just launch Octane Live Viewer. ठीक है, so once you have placed that in the plugin folder, उसके बाद आपने बस सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट करना है और इसको यहाँ पर लगा दें, या जहाँ पर भी if you have a second monitor you can just put it there. Just because I'm recording these things, so I cannot put this on a different screen, otherwise you won't be able to see it. Okay, so let's just hit render and see कि क्या होता है. So जैसे ही मैंने render hit किया, you can see it is just showing a 3D surface, but उसमें कोई lighting नहीं है, कोई shading नहीं है, it's just there. ठीक है, so let's just start creating some materials and see कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं. So यहाँ पर as you can see these edges are not really nice. ठीक है, इनको थोड़ा सॉफ्ट करना होगा. तो लाइक आई सेड कि हम एक एचडीएफई स्मूथ भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने पहले हटा दिया था. सो जैसे ही मैं ये लगाऊंगा वो फिर मैश कैलकुलेट होगा एंड देन इट विल शो द रिजल्ट. सो इट्स बेटर इफ कि मैं इसको पॉज कर लूँ एंड देन
स्मूथ इट एंड वेट फॉर इट कि कितनी देर में इसको कन्वर्ट करे, ठीक है, एंड लेट्स ट्राई अगेन. So you can see it is smoothed out, but ये बहुत ज़्यादा हो गया, so let me just make it 50%. एक और बार try कर 20%. Okay, this is better. This is better. Okay, so if you want to create some lights, you can do that from here. But objects, lights, okay. Or if you want to create materials, you can create materials from here. Let me just give you a quick overview of how things work and how the material works. So once I open this material manager, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ. So in the material manager, this is empty right now क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई material नहीं है. So let's just create one material. Objects, materials, create, diffuse. There are a couple of materials here जो कि मैं ऐसा हर tutorial में कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, but we will not be going through all of them. We will be just using the one which are required in this series. Okay. So diffuse क्या करता है? Diffuse don't have any reflections. Okay. Glossy have reflections. मैं जैसे एक बहुत quick और एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ दीज सर्फेसेस वर्क. सो इट्स ये ऐसी सरफेस क्रिएट करेगा जिस पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ऐसी सरफेस क्रिएट करेगा जिस पे रिफ्लेक्शन होगी. एंड दिस इज ग्लास, स्पेक्युलर, एंड दिस इज मेटल. ये मेटालिक सरफेस क्रिएट करेगा. ओके, सो राइट नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट अ मेटालिक सरफेस. जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये कुछ टाइम लेता है, कभी कभार नहीं भी आता, तो यू कैन जस्ट वेट और क्रिएट अनदर वन, तो वो यहाँ पे शो कर देता है दोबारा. So जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, nothing changed. So let me just drag and drop it to the volume measure. जैसे ही क्लिक करूँगा ये चेंज हो जाएगा. The reason why you are not seeing anything because यहाँ पे कोई लाइट नहीं है. तो let me create a light first. और मैं इसको हटा देता हूँ just for the sake of visual. Okay, so in the object section there's HDRI. So what is HDRI? HDRI is basically an environment. For example, if this object is in an environment, तो वो environment क्या होगा? Okay, और उस environment की light इस पर किस तरह affect कर रही होगी? Let me just give you guys a quick example of it, and let me download it for you as well. अच्छा, बाद में ये आ गया है तो मैं बताते ही चलता हूँ कि जैसे ही आप डाउनलोड्स में आएंगे, ठीक है, once you have the trial and everything, आपने यहाँ से Octane select करना है, Cinema 4D का ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चेक कर लेना है. अगर आप विंडोज़ पर हैं तो विंडोज़ में आ जाएं, और जो वर्जन है वो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, बट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ट्राई द लेटेस्ट वर्जन आउट ऑफ इट. आई थिंक द लेटेस्ट वर्जन आर द वन विच आर द मोस्ट विच आर ऑन द टॉप. ओके, बट ये भी मुझे लगता है आई थिंक ये वाला टॉप पर है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग एट द मोमेंट. But you can also try these things out, और फिर आप गूगल कर सकते हैं कि whatever version your PC or your Mac is supported. Okay, so हम लोग HDRI सर्च कर रहे थे. Let me search HDRI. Okay, so HDRI Heaven, और let's just search it. तो ये वेबसाइट है. नॉर्मली और भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, you can try these things out, but मैं नॉर्मली यहाँ से डाउनलोड करता हूँ. So एज यू कैन सी, लोग अपने आर्ट वर्क्स भी अपलोड करते हैं जब यूज़ कर लेते हैं किसी ख़ास HDRI को. ठीक है, यू कैन ऑल्सो फाइंड टेक्सचर्स है. ओके, सो लेट्स जस्ट से कि हमें ये चाहिए मेटल, या लेट्स जस्ट ट्राई दिस वन. एक्चुअली देखें, लेट मी जस्ट शो यू गाइस, लेट मी एक्सप्लेन इट अ बिट मोर. सो होता ये कि ये जो ओवरऑल सरफेस है, ये एक 360 वो है, फुटेज है, इमेज है. ठीक है, ये क्या करती है, ये रैप हो जाती है एक स्फेयर पर, एंड वंस इट इज़ रैप्ड अराउंड द स्फेयर, तो जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन आती है. सो इट फील्स मोर रियलिस्टिक, इट फील्स मोर कनेक्टेड. द रिफ्लेक्शन जो कि
ऑब्जेक्ट पर आ रही होती हैं वो इसको बैकग्राउंड का पार्ट बना देती हैं, ठीक है. सो द मोर रियलिस्टिक एंड द मोर नेचुरल लाइटिंग यू विल यूज, द मोर realistic and the more natural lighting you will get on the surface of your product or 3D model, anything. Okay, so it depends and it varies project to project. Okay, so let me just give you a quick example. So EXR normally use होता है because इसमें compression कम होती है या I think नहीं होती. I'm not really sure about that, but okay, but this is most of the time people use this. Okay, so let's download it. It's training. YT. Any other found KFF mobile act assets. Motion, C4D, shots, texture. Oh, मैंने ये already download किया हुआ है, so let me just remove it. Okay, Cinema 4D. Yeah. So let me just give you guys a quick example. जैसी मटी ऑब्जेक्ट पर आना है SGR environment, click किया, यहाँ पर एक Octane sky बन जाएगा. You can see a little sphere on it, so you will understand what I'm talking about. जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया टैग पर, ब्लू टैग पर, यहाँ पर ब्लैक एरिया आ जाएगा क्योंकि अब पूरे एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं है. ओके, सो ऑब्वियसली जब सब कुछ डार्क है तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा. सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इट. जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यू कैन सी द फोल्डर हियर. जस्ट क्लिक ऑन दिस फोल्डर और मॉडर्न बिल्डिंग 2 पे. सही, ये पूछेगा कि आप का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जांपल मैंने ये जो फाइल सेव की हुई है ये टेस्ट है, ठीक है, और ये एलडी के फोल्डर में सेव की थी. सो ये पूछेगा कि भाई आपके एलडी के फोल्डर में ही इस फाइल को कॉपी कर दें, तो मैं कहूँगा यस. सो नाउ एज यू कैन सी, लेट मी जस्ट ओपन दिस अप in the mobile ad, in the motion C4D shots LD, there is a texture folder. It has already created a texture folder और फिर यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया. ठीक है, इससे ये रहता है कि अब आप कभी भी फाइल कहीं पे शेयर करें या कॉपी करें तो इस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें होती हैं. सो यू कैन जस्ट कॉपी दिस होल LD फोल्डर. ओके, सो एज यू कैन सी कि जो एनवायरनमेंट है वो इस पर अफेक्ट कर रहा है. So if you want to rotate this environment, it's super easy. Just click on this tag और फिर आप rotate X कर सकते हैं. So you can see how the environment is affecting here. See? So the more different environment you will use, the more different results you are going to get, the more different reflections you are going to get. Because the key thing about lighting is to design your shadows. For example, if everything is lit up, so सब कुछ flat लगेगा. ठीक है, so let's just say, ठीक है, मैं इसको और super वो कर लेता हूँ डाली ताकि मुझे एक proper isometric view मिले. Okay, so अभी भी कोई shadows बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं, so I will just have to rotate it, see कि कहाँ पर ये सही अच्छी कोई बेहतर shadows मिल रही हैं. Okay, I think this will work just for the sake of understanding. Okay, so you can see the noise here. Right, so ये because इसलिए क्योंकि यहाँ पर samples बहुत कम है rendering के. So once you go here, यहाँ पर you can see the samples of this lighting. So let's just increase it. See ये कम हो गए, यहाँ से ये render भी होता रहेगा साथ साथ. So let's just click and drag this material onto the surface of the model we have created so far. So now you can see it looks like a metal, right? So जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, there are a few changes which you can make. ठीक है, so first is diffuse. Metal don't have any diffuse. Specular.
So let me just give you an understanding of it. अगर मैं इसको बंद भी करता हूँ तो it shouldn't affect anything. As you can see, it's not affecting anything. But in a specular, if you reduce the specular, you will see कि reflections कम हो रही हैं. तो it's all dark now. कोई reflection नहीं है. Okay? But ये कि जितनी आप reflection बढ़ा देंगे उतना ही environment की reflection इसके ऊपर नज़र आएगी. Specular map is almost the same thing, but it also allows you to add textures. Specular, but भी आप textures add कर सकते हैं, by the way. I don't know. Okay, so okay, specular map को let's leave it because I don't want to make things more complicated. जो चीज़ें बहुत ज़्यादा obvious हैं और जब हम use करेंगे आगे, I will just give you guys a quick run through of them. Roughness is roughness. I mean, if you want to increase the roughness of the metal, you can just go way beyond or just increase them a bit. Okay, zero reflection. Let me just zoom in. तो ये environment की जो reflection है ये जैसे ही मैं increase करूँगा इसकी reflection बढ़ती जाएगी. Right, the surface doesn't look really nice right now. I don't know what's happening to the camera. Let me just fix it. Okay, so the surface the surface of this mesh is a bit weird right now क्योंकि ये जो edges आ रहे हैं ये off हैं. तो let me just remove this adaptation thing. ये surface को बेहतर कर देगी hopefully. और इसमें से मैं ये भी हटा देता हूँ SDF mode. ठीक है, so things are more even now. Okay, so इसमें देखें you can see the subdivisions there. Okay, so SDF इसको on करके देखते हैं how much we can create. You take I'll just zoom out right now. It's not a tutorial of modeling at the moment. Okay, so you can see these things, right? In the roughness, इसके अलावा you can also check these things out. IOR is important. Okay, if you are dealing with metal and how to create one, you can check these things out. Different metals have different IOR. Okay, so let's see. Okay, so the index of refraction, you can just check things here or use these values. Okay, so this will help you to get better results and more realistic results. Okay, so I'm just quickly going through all these things. I know this is a bit fast right now, but just to give you guys a surface knowledge of it. इसी तरह if I just remove it from here and create a material, create a diffuse material and apply this. So you can see it doesn't really change anything because it doesn't have any reflection. But what you can do is you can change the diffuse. For example, if you want some bluish color, you can change that. इसमें कोई reflections नहीं है, कोई refraction नहीं है, तो वो surface आपको सिर्फ light catch कर रही है, but कोई जो texture है या surrounding की कोई चीज़ है वो कोई catch नहीं कर रही. We have no reflections. Okay, just the lights. Okay, roughness. I don't think it will work because obviously there's no reflections, so there shouldn't be any roughness. Is there a bump map? We will discuss that later. Opacity hai. Opacity आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें. See, so this can also create some X-ray effect for you.
Transmission is we will talk about this later. Emission is like if you want to emit lights from it, you can do that. Let me just give you a quick example of it. Emission. जैसे you click on texture emission, इसमें आए, and you can use surface brightness. So you can see this object is emitting light. Right now you cannot see it because इसके बराबर में कोई और object नहीं है जिस पर light जाए. Okay, so let me just create a sphere so that you can see it. ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं metal texture apply करूँ, so you will see the difference. Metal और इस पर. ठीक है, right now the brightness of it is not enough. Maybe we can also change this type of material after creating it. For example, मैंने जैसी material metal पे click किया, I can change this to glossy. ठीक है, तो glossy will have the reflection and color. Okay, so but this will not have IOR and anything like that, जो कि metal की properties हैं. Okay, so reflection. अभी ये reflections तो ज़रूर आ रही है, but it's not working as a light object. ये जो box है. So let me just click on it. जैसे ही मैं emission में आऊँगा, इस पर click करूँगा, and यहाँ पे we need to select something. So let's say we need a color, जो कि color पे हो सके. तो उसके लिए just C4D Octane, and you can just go into the RGB spectrum, and now you can see कि ये lit up हो गया. Right, so it is emitting light. So let me just refresh it. Let's see if it works or not. अब क्योंकि ये surface इतनी करीब है, you will see these things. However, if the environment is dark and if there are a lot of polygons, you will be able to see these things. You will be able to see the difference here. So this emission thing can help you out to create lights, which we will be doing in the next tutorial. Okay, let's just close it for now. So as you can see, if we are using the normal method, the normal diffuse, it doesn't have that amount of emission, right? और जैसे ही मैं emission on करता हूँ, this will increase. You can see the brightness and the luminance of it. Let me just remove it. Okay, so let me give you guys one more example of how to add textures. For example, let me just remove this and let me just remove everything. Let me just add this cube outside. Okay, now we just have a simple cube. और now we can just add some fillet so that ये अच्छा सा हमें यहाँ पे end में curve मिल जाए. Radius में कर देता हूँ 1.5 or something. So now this the surface is a bit even right now. It shouldn't be like that. जो भी surface में change आ रहा है वो पता चलना चाहिए. इतना ज़्यादा exposure नहीं होना चाहिए lighting. ये surface flat लगे. This looks flat. So let's just change. Okay, this looks much better. Okay, so let's just remove this and add this here. Okay, now we can add some textures as well. So let's say, for example, we need some polka dots or line effect here. So in the diffuse, यहाँ पर हम add कर सकते हैं patterns को भी. So let me just add some patterns. Okay, so for example, this pattern. अब you need to make sure कि ये pattern repetitive हो. For example, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो वो यहाँ से continue हो रहा हो आगे से, और अगर ये यहाँ पे end हो रहा है तो इसका जो opposite है वो यहाँ से continue हो रहा हो. So जो कि ये हो भी रहा है. ठीक है, so this will work. अभी यहाँ पे इस पे watermark आया हुआ है, but let's just forget about it because it's just for the sake of learning.
So I'm going to use this one. Or in the mobile ad and the motion C4D shots LT, इसको मैं टैग कर देता हूँ यहाँ और texture. ठीक है, so let's just use this. And in the texture, अब क्योंकि मैंने उसी जगह पर फाइल के ऊपर ही टेक्स्ट का जो फोल्डर है ये डिफ़ॉल्ट में ख़ुद ही बन जाता है जब हमने उसको अग्री किया था पहले. सो इसमें रखा है तो अब मुझसे नहीं पूछेगा कि इसको कॉपी करूँ या नहीं, बिकॉज इट इज़ इन द राइट डायरेक्टरी. सो यू कैन सी दिस thing. Okay, we can also mix this stuff with the color of this diffuse, so you can change it. इसके अलावा if you want to you can see कि ये pattern हर जगह से merge हो रहा है और हर जगह से connected है, so it looks nice. यहाँ से नहीं है, so we need to work on it. For example, let's just say कि we need to increase this size or decrease this size. So जैसे ही मैं इस पर click करूँगा एक बार, okay, if you double click on it अलग options आएंगे, so you need to just click one time. Okay, so ये UV mapping पर set है. You can also check these areas. We will explore these things time to time, but let me give you quick examples of it. For example, अभी जो UV wrapping है वो किस तरह से काम कर रही है, तो it is wrapped around all the surfaces, all the polygons in default. I know it is not going to be that understandable right now, so let me just give you a quick walkthrough of it. For example, if अगर आपको ये अगर ये texture project करना है एक sphere की form में, you can do that as well. So right now let's see this. अभी ये क्या हो रहा है, एक sphere के through project हो रहा है, which doesn't look really nice. Let me give you a quick example of it. जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये आपको दिखाएगा कि क्या प्रोजेक्शन चल रही है. So if I scale it or if I rotate it, you will start seeing the difference. Okay, but इस तरह की surfaces के लिए normally I just use cubic because it is made for it. You can see कि अगर मैं इसको scale करूँ और इसको कम करूँ, so it will look nice. ठीक है. So इसके अलावा you can also change a few things. For example, let me just click on it, और for example अभी ये diffuse की जगह मैं इसको glossy कर देता हूँ. So now there should be some reflections on it. Let me delete it. यहाँ से भी delete करते हैं. Let's just try metal surface now. Create. Oh, we haven't tried specular. Let's try specular. Specular is just to create glass effect. We are going to use this as well. So or cube. Okay, so this is just glass. Okay, there can be some reflections and some roughness, as you can see. Okay, so that's how you can create glass. Glass का अपना भी color हो सकता है. In the transmission, you can change some transmission colors. ठीक है, normally I don't really use RGB. Let me see. How can I change that? HSV. Okay, normally I use this method to change the colors. It's more convenient this way. Okay, so again, whenever you change the surface, you need to think about the lighting as well. So I'm not really going to talk about lighting here. I'm just giving you guys a walkthrough of the materials and how can you use them. For example, अब यहाँ पर let me just create a metallic surface. Okay, once you start converting things, you will see a bit of variation. So I would suggest कि बेहतर है अभी start में we should just create metal surfaces all around. Let me just delete it. Okay, so we can also add some roughness over it. For example, मुझे roughness अगर add करनी है और मैं चाहता हूँ कि certain areas में और हर जगह नहीं हो. So what we can do is we can
download some textures as well. ये भी हो सकता है, but Cinema 4D के अपने भी होते हैं. Let me just give you a quick example of it. ये आप bucket को click करें, ठीक है, asset browser कहलाता है ये, यहाँ से भी आ सकते हैं. ये रहा. Okay, just type maybe roughness. If there is any, you will get it. देख रहे हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर है. ये खैर यूवीज के है, ये अलग अलग मटेरियल्स हैं, बट व्हाट वी वांट आर डिफरेंट. I don't know if it's okay. इस तरह नहीं. Let's search for here. Texture नहीं आ रहे. Textures, movie, sound, UV surfaces, bar, concrete, background, granite, graphics. So you can download these things as well as textures. But what I want is metal. Let's see if we have any. Yeah. I don't know ये किस जगह पर है. Let's just see reveal in asset browser. तो ये है templates, surfaces, scratches. Okay, so let's just say कि हमें ये यूज़ करना है, तो you can just download it from here. So ये click करेंगे तो ये download हो जाएगा थोड़ी कुछ देर में. And once it is downloaded, you can just drag and drop it on the surface, on the roughness. So here you can see you can add some roughness over it. So ये क्या करेगा कि जो area, just open this up and show you guys a preview of it. Reload, added image. तो ये दिखा देगा आपको कि image क्या है. Hopefully. Let's just open it. यार कहाँ पर है ये? अरे कहाँ पर? It should just open up like this. Let's see if it is. Small, huge. इसका huge और छोटा है. Anyway, so you can get a gist of it. You can also search from here. Let's try other scratches as well. So ये basically करता है कि जो black area है और जो white area है. अब you can also invert these things, but right now as we can see कि जो roughness का part है, roughness वहाँ पर बहुत ज़्यादा है जो white area है, और जो black area है वहाँ पर roughness नहीं है. So it is creating a scratch effect. Okay, you can also invert it. For example, if I just go to roughness, go to this here, black point को मैं 1 कर दूँ और white को मैं 0 कर दूँ, so it will be just inverted. So you can see the inverse effect of it. So जो यहाँ पर आपको roughness नज़र आ रही है वो opposite हो जाएगा. Let me just click here. And as much as you are increasing this, ठीक है, जितना स्प्रेड बढ़ाते जाएंगे उतना यहाँ पर भी ये चेंज आता जाएगा. So it all depends on how are you working and how you want to change these things. इस तरह से you can also download some dust and scratches. For example, scratches or texture. So you can see, for example, we want to download this. Okay, and let's just try that. In the roughness channel, or
लेट मी जस्ट इसको रिमूव करते हैं, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, और इस पर टेक्सचर पे क्लिक करते हैं, टेक्सचर, और ये रहा आपका reference, enter, and now you can see. Okay, so this is how it should look like when you invert the blacks and whites. Okay, so you can see the reference here. Okay, so this was a quick overview of how things work. Iske alawa, the way I was talking about inverting these things, you can also try that out, but it's, I don't know if it's work or not. Let me check. It should work because normally it allows you to invert the whole thing. Maybe let's just try one thing. Okay, let me just remove it, reset, because, and try C4D or Octane image texture. Here, let's just import it. Okay, so now let's just try to invert it here. Yes, this is the right option to invert the whole thing, because before we were using default मेथड, क्योंकि कभी कभार क्योंकि हम प्लगइन ऑक्टेन यूज़ कर रहे हैं तो वो कभी कभार सपोर्ट नहीं करता है कुछ ऑप्शंस को जो कि सिनेमा 4D के अपने हैं. ओके, सो यू नीड टू यूज़ these options from the C4D Octane feature or option. Okay, so this was a quick overview of how can you create textures, and how can you add roughness, and how can you add different materials. So you are going to improve a lot after creating and messing around with these features, because they require a lot of back and forth and things like that. Okay, so let's see you guys in the next video. Thank you.